Good morning, students. I am your new teacher. My name is Piyali and I am going to teach you EVS subject. And today we are going to start with skeleton system. In Hindi, basically, it means skeleton system means Kankal Pranali. So I just want to share, skeleton system. So students, let's know about how skeletons look like. This is our skeleton, which it's a kind of our inside our body. So it's made up of the collection of bones. In our body, there are 209 bones. Okay, what 209 bones is basically present our body. The skeleton system, the bones which provides it's a defined shape and support to our body, it is called skeleton. Skeleton is that which is protect our internal organ, जो हमारे internal organ को protect करता है और हमारे body को movement करने में help करता है, उसे कहते हैं skeleton. हमारे skeleton के चार मेन पार्ट होते हैं. चार मेन पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्कल, नंबर 2 बैकबोन, नंबर 3 रिब केज और नंबर 4 लिम्ब बोन्स. स्कल हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. स्कल जो हमारे एकदम टॉप मोस्ट पार्ट, हमारे स्केलेटन के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में होता है. दैट्स कॉल्ड स्कल. दिस इज स्कल लुक लाइक. ओके स्टूडेंट, the skull is a bony framework of our head and the skull is made up of 22 bones. The 22 bones, which there are the 8 flat and interlocked. Interlocked means which are connected to each other like this, that connection. This is called interlocked. And this flat and interlocked is called as a cranial bones. Which bones? This interlocked and these bones are called cranial bones. Okay. Now there are 14 bones which are upper jaw and jaw jaw. This is called jaw lines. This is our face jaw lines. और बाकी सारे जो bones होते हैं वो हमारे face के दूसरे part में पाए जाते हैं. उन सारे faces के जो bones part होते हैं उन सारे bones को कहा जाता है facial बोन्स. जो हमारा स्कल होता है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, आईज को, टंग को और हमारे इंटरनल एयर्स को. ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? इज देयर एनी डाउट? आई कैन एक्सप्लेन again. If you have any doubt, you can raise hand. Okay, to vertebral columns. Vertebral column, it's this, you can see this is the vertebral column. Okay, our skull, as we before study our skull, our head, this skull is attached to our vertebral column. Okay, vertebral column is known as spine. Spine, which is just exactly behind our body, this is called spine. There are 33 स्मॉल्स जो बहुत छोटे, 33 छोटे छोटे और इरेगुलर शेप बोन्स होते हैं. उन सबको मिला के बनाते हैं और उन बोन्स को बोला जाता है वर्टिब्रे. और वर्टिब्रे हम लोगों को अलाउ करता है बेंड करने में, ट्विस्ट करने में और सीधा खड़े होने में. ठीक है, और ये हमारे ब्लड वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे ब्लड वेसल और स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारे नर्वस सिस्टम के लिए हमारे वर्टिब्रे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू वांट टू सी द पिक्चर? या, दिस वन इज स्मॉल बोन्स व्हिच कनेक्टेड and it's just behind and it attached to the skull. Here is skull, then it's a spine bone and it's small bones which connected and interlocked each other. This is called spine. Okay, now come to rib cage. This is how rib cage look like. Okay,
The rib cage is a very flat and curved bones. Curved bones, you can see these are the curved. These bones are curved. This is called rib. Okay. The rib cage consists of 12 pairs. This one is 12 pairs. This side, 12 bones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These 12 pairs of bone this are bow shaped, this container ribs, and the 10 bones, see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These 10 bones are connected to a long flat bone is called the chest bone. This connected to chest bone. Okay. This chest bone is called as a breastbone. And two pairs live. The two pairs, see this one, two pairs which bones are attached to the spine is just under the breastbone. The two pairs bone is called as a floating ribs. This is called the floating ribs, and this one is attached to our spine cord. Okay, spine cord. Spine cord, as we studied about the spine cord, right? Anybody know about the spine cord? Can you please explain? Okay. So now, and this rib cage is protect our lungs and heart. Which two parts the rib cage protect? Lungs and heart. Okay. Limbs. Now come to limbs. These are limbs. Okay. This limbs. Our hand and this our leg. हमारे लिम्स में दो टाइप के पेयर होते हैं, 2 आर्म्स और 2 लेग्स. हमारे आर्म्स के जो लिम्स होते हैं उसे कहा जाता है 4 लिम्स. हमारे आर्म्स के लिम्स को क्या कहा जाता है? 4 लिम्स. और हमारे जो शोल्डर ग्रिडल होते हैं वो 2 शोल्डर ब्लेड्स और कॉलर बोन को कंसिस्ट करते हैं. हमारे शोल्डर ग्रिड्स, these are the shoulder blades. Shoulder, this one is your shoulder, this one is your shoulder blades, and this here is a bone. This is called to collarbone. Okay. हमारे जो आर्म्स में होता है बेसिकली देयर आर 3 बोन्स. 3 बड़े बोन्स होते हैं और बाकी सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं. जो हमारे अपर आर्म्स, मतलब दिस सेक्शन अपर आर्म्स में जो एक लंबा बोन होता है उससे कहते हैं ह्यूमरस. और हमारा जो लोअर आर्म, दिस लोअर आर्म के 2 बड़े बोन होते हैं जिसे कहते हैं रेडियस एल एंड अल्ना, जो हमारे एल्बो के साथ कनेक्टेड होते हैं. दिस वन इज द एल्बो, दिस 2 बोन्स, दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्ना. दिस बोथ कनेक्टेड टू एल्बो. ओके. एंड नाउ कम टू आवर लेग्स. हमारे लेग्स में 3 लंबे बोन्स होते हैं और बाकी सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं. हमारे आर्म्स में कितने बड़े बोन होते हैं? देयर आर 3 लॉन्ग बोन्स और बाकी सारे छोटे बोन्स. और हमारे लेग्स में भी 3 लॉन्ग बोन्स और बाकी सारे छोटे बोन्स होते हैं. और जो सबसे बड़ा बोन होता है हमारे बॉडी का वो होता है थाई में. सबसे बड़ा बोन कहाँ होता है? थाई में होता है. उस बोन को बोला जाता है फेमर. उस बोन को क्या बोलते हैं? फेमर. एंड हमारे बॉडी में सबसे छोटा बोन जो मिलता है वो हमारे ईयर में मिलता है. हमारे सबसे छोटा बोन कहाँ है? ईयर में, जिसे कहते हैं स्टेपल. व्हाट कॉल्ड? स्टेपल. जो हमारा जो फेमर बोन है थाई का, जो सबसे बड़ा बोन होता है हमारे बॉडी का, वो हमारे पूरे बॉडी वेट को हैंडल करता है. ठीक है. और हमारे नाउ अब बात करते हैं लोअर लेग की. जो हमारे पैर के नीचे वाला लोअर लेग है उसके बेसिकली 2 बड़े बोन होते हैं जिसे कहते हैं टिबिया एंड फिब्यूला. टिबिया एंड फिब्यूला. टिबिया एंड फिब्यूला.
अब आते हैं बोन कैसा होता है. सी, दिस वन इज आवर बोन. नाउ वी गोना स्टडी अबाउट द इनसाइड आवर बोन. ओके, हमारे जो बोन होते हैं उनके बहुत छोटे छोटे होल्स बने होते हैं. यू कैन सी दिस स्मॉल होल्स. ओके, जो हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल को एंटर करने में अलाउ करता है. यहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व सिस्टम्स अलाउ करता है एंटर करने में बोन के अंदर. ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे छोटे और लंबे बोन्स होते हैं. जो लंबे बोन्स होते हैं वो बहुत हॉलो, हॉलो मींस इन हिंदी यू कैन से खोखला. ठीक है, लंबे बोन्स में बहुत हॉलो और बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी सबसिस्टेंस पाए जाते हैं. दिस इज स्पॉन्जी सबसिस्टेंस. और उस स्पॉन्जी और जेली लाइक सबसिस्टेंस को बोला जाता है बोन मैरो. दिस वन इज बोन मैरो. सी, इनसाइड आवर बोन, दिस इज स्पॉन्जी स्ट्रक्चर. ओके, spongy and jelly like structure. This is called bone marrow. This is inside our bone. Okay, the blood vessels, जो blood कणिकाएं होती है, this is वो हमारे बोन मैरो को प्रोड्यूस करती है. Now come to joint. Joints are very important part our body, because the way we move, the way we things we did this all because of the joint. ठीक ठीक है, हम जो भी काम करते हैं, हमारा बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो सारा जॉइंट की वजह से होता है. जॉइंट्स जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स कनेक्टेड होते हैं एक जगह पे, उस जगह को बोला जाता है जॉइंट. जॉइंट में एक स्पेशल लुब्रिकेंट पाया जाता है जो हमारे बोन्स को स्मूथली काम करने में हेल्प करता है. हमारे पास दो टाइप ऑफ जॉइंट्स है, एक मूवेबल, दूसरा इमूवेबल. दो टाइप्स कौन कौन से हैं? मूवेबल और इमूवेबल. मूवेबल जो मूवमेंट कर सकता है और इमूवेबल जो मूवमेंट नहीं कर सकता. द मूवेबल जॉइंट इन आवर बॉडी, हमारे मूवेबल जॉइंट के 4 क्लासिफिकेशंस है. अब हम क्लासिफिकेशन ये देखो. बोन्स, ये बोन है हमारा बोन. दिस वन इज बोन, this one is bone. They all joint in a single point. This point, this is called joint. Okay, bone and this one, this joint in a single point, it is called joint. Movable joint का first part, hinge joint. Hinge joint हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे कि एल्बोज में, नीज में, टोज में और फिंगर्स में. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एल्बोज में, नीज में, टोज में और फिंगर्स में. जॉइंट्स हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में. जैसे कि हिंज का भी यही काम होता है कि वो हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट करे. This one is femur. We studied about femur, right? And this one is tibia. 2 bones, femur, tibia. This movement. This moves. This is the basically work of joint. Now come to pivot joint. Pivot joint जो होता है skull. We studied about skull, right? Right, students? We studied first at the first. What is skull? Anybody can answer? Skull. Yes. Okay. And what is spine? We just studied about spine, right?
What is spine? Yes, yes, good. Okay. That help. This one. Wait. Let me show you. This one is skull. This one is our skull. This part joints. This is called pivot joint. Okay. This part. This is skull. This is spine. This one joints. This is called pivot joint. जो हमारे पाइवोट जॉइंट जो हमारे गर्दन को इधर इधर जो साइडवेज हम मुड़ाते हैं उसकी हेल्प करता है. सी लाइक दिस वी जस्ट साइडवेज, राइट? दिस इज द वर्क ऑफ पाइवोट जॉइंट. हियर द पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट हियर. नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट. The gliding joint is basically present between small bones such as vertebrae, wrist and ankle. बहुत छोटे छोटे बोन्स में ग्लाइडिंग बोन्स पाए जाते हैं. उसमें से कौन कौन से पार्ट हैं? वर्टिब्रे, रिस्ट और एंकल. Okay, now just we studied about the skeleton system. Any doubt, students? You can ask me. Let's do some exercise. Okay, so the skeleton system is made up of what? Skeleton system is made up of. The first line, what did I say? Yes, right. Its answer is bones. In our body, how many bones are there? There are 206. Yes, 206 bones. The skeleton system protects dash organ. Which organ skeleton system protects? Skeleton system. Where skeleton system is present? Right, inside our body. The answer is D. Now, bones that form our skull protects the bones that form our skull protects the answer. Skull. Where is our skull? Yes, topmost. Yes, its answer is brain. Good. Bones cannot move on their own. They need dash to help them move. They need answer. Okay, yes, good. Muscles. The vertebral column protect the. Where is vertebral column present? Vertebral column protect the. Good. It's in our backbone. Yeah, backbone. The answer is backbone. The hip girdle protect the urinary bladder. Okay. The rib cage protect the. We studied about rib cage, right? Yes. Rib cage protect the heart. Good. How many bones in the skull? How many bones? Skull, head. How many bones? 22 bones. Good. The rib cage consists of dash of bow-shaped ribs. How many pair? Ribs. How many pair? 12 pairs. Yes. The longest bone in the human body. Which one? Longest bone. I said thigh. What that bone name? Femur. Good. Femur. The blood cells are produced in. The blood cells are produced in bone marrow. Good. Dash is a through fibrous tissue that connect one bone to another to strengthen. It's a ligament. How many types of joints have in our body? How many types of joints? 2 types of joints. Good. Spongy and jelly-like substance is called. क्या बोलते हैं स्पॉन्जी और जेली लाइक सब्सटेंस को? बोन मैरो.
मैंने तुम्हें photos दिखाया था ना, that joint, a bone that inside a jelly and spongy substance is formed. This is called bone marrow. Yes. So that's all for today's class, students. I hope you all enjoyed and learned something. If you have any doubt, you can ask me now, or otherwise we can conclude. Okay, students, thank you so much. I hope you all learned something, and okay, bye bye, take care. Thank you.